Jai Hind friends, welcome to this next video which is 1000 steps to uniform. This video will help you out to gain more knowledge if you are preparing for defense exam. यहाँ पर मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ हर एक वीडियो में. Now the objective of these questions is to impart good skills while handling any question of UPSC, because UPSC has its own habit, unpredictable habit of trapping the students, trapping the learners, जो कि 4 ऑप्शन ले डाउन करेगा और आपको ट्रैप्स में फंसाने की कोशिश करता है. तो मेरे ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे उस ट्रैप में फंसने से बचने के लिए. ठीक है. So if you are preparing for UPSC, NDA, CDS, AFCAT, CAPF for 2021, this video will help you out to get some extra bit of knowledge from the others. And just a reminder, ये उन वीडियोस की तरह नहीं है जो आजकल YouTube पर आपको चल रही है फॉर फ्री. ठीक है. फ्री में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, बहुत कुछ बोगस आपका टाइम वेस्ट करा जाता है. ध्यान रखना, यूपीएससी ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछती है. यूपीएससी मींस इट विल आस्किंग यू सम गुड अमाउंट ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस. Okay, so let us proceed further. My name is Anshum Verma and I come from a defense background. These are my credentials. I have done my schooling from Army Public School, Delhi Cant. Further, these are my qualifications. I have already qualified UGC NET JRF exam, and I am eligible to teach as assistant professor. I have already have a teaching experience of 10 years and I have myself qualified various defense exams. So guys, before I proceed, I just want you to subscribe to this channel, Anshum-UNTIL the uniform. Give me some likes on this video and also hit the bell icon so that every time I come live, you will be getting these videos. Okay, you will be notified with the videos. And this is my WhatsApp number for any queries, and do join my Telegram channel, and the link is provided in the description box. Okay, so these are the courses that I will be offering to you, and these are the benefits of my course. I have elaborated these things many times in my earlier videos. Now, this is lecture 3, and guys, for the first time I am introducing geography, because this is what I do. I mix up everything, because first 2 sessions, lecture 1 and lecture 2, are of polity. So this section will be of geography now. यहाँ पर मैं गुड अमाउंट ऑफ ज्योग्राफी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, जो कि आपको हेल्प करेगा ज्योग्राफी के फियर से बाहर आने में. सो आपको व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ दिस सीरीज, द अप्रोच ऑफ दिस वीडियो. आपको क्या करना होगा, एवरी टाइम व्हेन आई पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है. चाहे आप वीडियो को पॉज कर दीजिए. आई विल ट्राई टू गिव यू सम टाइम. मैं भी 5 सेकंड का पॉज लूंगा. You can extend that pause up to 30 seconds or 1 minute till the time you understand the question. Now, once you understand the question, what you have to do is you have to then keep a copy in hand. आप अपनी कॉपी रखिए, उसका मार्क कीजिए आंसर, और फिर देखिए at the end of 10 questions देखिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं. Now, after marking all the question, what you have to do is just do the analysis, learn the explanation, what I have done, make notes if anything new that I have provided to you which is not there in your notes. अपनी चीजों को आप अपडेट कर सकते हैं. So this is how you will approach by each of the sessions. Now, I will be providing these PDFs of these sessions as well. The PDFs will be uploaded on this Telegram channel. So इन PDFs को फ्री में लेने के लिए आप इस Telegram channel को ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. The first question is on your screen. The question is around tides. ठीक है, the question is around tides. I'm giving you 30 seconds of time to pause it and then read it. Consider the following question. The sun, moon and the earth are in a straight line. Moon's orbit is closest to the earth. The tidal range is greater than normal. Now, these are some conditions. Now, the above condition defines which of the following tides. Now, guys, tides तो हमने पढ़ी थी. ये पर्टिकुलर एक सीरियस लेवल का क्वेश्चन है गाइज, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. नाउ एनडीए जैसे एग्जाम में हाउ टाइड्स अकर, व्हाट आर द रीजंस फॉर टाइड, ये सब पूछ लिया जाता है. बट सीडीएस में थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी एट टाइम्स गोज इनटू सम डेप्थ्स. So which of the type of tides are explained here? So there are 4 type of tides: apogeian spring tide, ephelian spring tide, perigean spring tide, or perihelion spring tide. Now you should know that
टाइड्स, इफ आई एक्सप्लेन टाइड्स, टाइड्स का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा मून की मूवमेंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेरे सेशन में हेल्प मिलेगी एलिमिनेट करने में ऑप्शंस को। ठीक है, सो अगर मैंने बोला टाइड्स जब बनती हैं उस पे जो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो ग्रेविटेशनल वेव ऑफ gravitational effect of moon पड़ता है। Actually the reasons behind tides are the gravitational pull of the sun, the earth and the moon। इन तीनों के आपस के ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की वजह से टाइड्स जनरेट होती हैं। अब टाइड्स कैसे बनती है उसको मैं ज्योग्राफी के कोर्स में समझाऊंगा, बट ज्यादा इम्पैक्ट किसकी वजह से आएगा, मून की वजह से आएगा, बिकॉज इट इज मच मोर क्लोजर। सो आप इन पोजीशंस को एलिमिनेट कर सकते थे, पेरीहीलियन, एपीहीलियन। अब जिसको ये नहीं पता ये पोजीशंस क्या होती है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर माय ज्योग्राफी कोर्स, वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली अमंग दीज टू, एंड इफ आई से द राइट आंसर इज सी। ठीक है, so once in a month I will straight away guys give you the explanation here, because I have already explained these things in a shorter way, so you can pause it and read it wherever it is necessary. I will explain that in detail. So once a month, when moon's orbit is closest to the earth, so when earth and the moon, the earth also rotates and revolves, similarly the moon also rotate as well as revolve. Both the motions are done by the moon. Okay, so when the moon is closest to the earth it is called as perigee. On the other hand, when the moon is farthest from the earth it is known as the apogee. Okay, so in such situation the tides which will be occurring at this position will have these characteristics. The sun, the moon and the earth will be in the straight line. So this type of tides, when such tide occurs, it is called as spring tides. Okay, ऐसी टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। ये दो तरीके से बन सकता है, जब मून अर्थ यहाँ हो और मून यहाँ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्थ यहाँ खिसक जाएगा, मून यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Moon's orbit is closest to the earth, that is why it is perigee, and the tidal range is greater than the normal. इस केस में tidal range ज्यादा होगी, यानी tides ज्यादा ऊंची होंगी, high tides ज्यादा आएंगी। ठीक है, so this is the explanation of question number 1. Let's move on to question number 2. Which of the following is or are favorable condition for faster decomposition of organic matter in the soil? Pause the video for 30 seconds, read the questions and the options very carefully and then answer. Okay, so guys, answer, I hope you have marked the right answer. Now, if the student is from bio background, so they know, और यू हैव स्टडीड एनवायरमेंट बाय एनी चांस। ठीक है, एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम मिस कर देते हैं और जो कि जिसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। सो डिट्रियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिट्रियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बायो में जरूर पढ़ा होगा, बायो स्टूडेंट्स ने जरूर पढ़ा होगा। ये डिट्रियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है विच आर, it is also called as saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition. Now in such mode of nutrition what happens is the role of decomposers, okay, so whenever there is, which of the following are the favorable conditions for faster decomposition? Obviously when the soil will have more of detritus rich nitrogenous substance, जिसकी वजह से जो कन्वर्जन, जो डिकम्पोजर्स का एक्शन होगा वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली कोल्ड टेम्परेचर, these detritus mode of nutrition are with the help of bacteria, we all know that, and bacteria they inactives, it goes into a inactive states when it is cold temperature। बैक्टीरिया को थोड़ी बहुत हीट चाहिए होती है, एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल भी इनको चाहिए होते हैं, तभी ये भी कार्बोनिक जो प्रोसेस होगा, जो डिकम्पोजिशन एक्टिविटी होगी वो भी ये तभी कर पाएंगे। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 2, दैट इज 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन ए। इफ 3 इज एलिमिनेटेड यू कैन इजिली एलिमिनेट दीज 2 ऑप्शन। अगर आप थर्ड को क्रॉस कर देते तो ये दो बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाने थे। ठीक है,
So solution is A. Moving on to the next question. Which of the following is or are correct regarding the igneous rock? So I have already explained there are three type of rocks: igneous, sedimentary, metamorphic. हर तीन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे उसको डील करना है, we will talk about those things. So they can form beneath as well as on the surface. They are devoid of fossils. Quartzite and granite are the igneous rocks. ठीक है. So अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, these are the examples. ठीक है. I'm giving you 30 seconds of time. Pause the video and mark the right answer. Okay, I hope आप सबने इस आंसर को मार्क कर लिया होगा. So the correct answer of this is option A, because I hope आपका ध्यान चला गया जो होगा quartzite and granite. Granite तो igneous का example है, but quartzite is the example of the metamorphic rock. Let us see the explanation. Now if I explain it through these questions only, इस statement से ही मैं आपको explain करने की कोशिश कर दूं कि they are found beneath as well as on the surface. बिल्कुल igneous rocks बनती हैं from the solidification of lava. जब भी लावा आपका सॉलिडिफाई कर जाएगा, या मोल्टन मटेरियल, ये मैग्मा भी हो सकता है, जब ये सरफेस के नीचे भी सॉलिडिफाई कर सकता है, ठीक है, और सरफेस के ऊपर भी ये सॉलिडिफाई कर सकता है. इज इट क्लियर? सो जब भी ये मोल्टन मटेरियल सॉलिडिफाई कर जाएगा वो इग्नियस रॉक कहलाएगा. ठीक है. अब ये सॉलिडिफिकेशन सरफेस के ऊपर भी हो सकती है और सरफेस के नीचे भी हो सकती है. जो ऊपर होती है ऑब्वियसली उसको कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो नीचे होगी उसको कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, intrusive igneous rocks. ठीक है, extrusive and intrusive. So the answer to this question is A. Third question का आंसर क्या है? A. Is it clear? Then which of the following are correctly describes the phenomena of break in monsoon? So read all the statements very carefully and then mark the answer. Let me read it for you. A rain deficient situation in an area when the mean annual rainfall is less than 75% of the normal. When the rain fails to occur for more than one or more weeks, the southwest monsoon period, after having the rains for a few days, bifurcation of the monsoon winds into the Arabian branch and Bay of Bengal branch, sudden onset of the moisture-laden winds associated with the violent thunder and lightning. So you should know that which of the following should be the correct answer for this. Okay, I am pausing it for 5 seconds. Let us see how many of you can mark it correct. Okay, I hope everyone has marked the correct answer. Now, answer to question number 4 is, guys, which of the following are correctly described? Okay, so the answer to this question is C. Okay, C. It describes the break in monsoon. Okay, so let me just explain it to you. Sorry guys, there is there is a mistake here. So answer to this question is B, not C. Okay, because third statement is not the explanation of break in monsoon. It is just the division of the monsoon winds. So I am making it correct here. It is B. So let me just explain it to you. When the trade winds approach the land, their southwesterly direction is modified by the relief and thermal low pressure over the northwest India. Now the monsoon approaches the landmass in the two branches, that is Arabian branch and Bay of Bengal branch. Okay, so if I draw this Indian peninsula, now due to the low pressures in the northern region, the trade winds get attracted towards the northern region. Then these winds which get attracted towards that low pressure is called as the monsoonal winds, because it is coming from the southwest direction. It is also called as southwest monsoon. So it comes in two branches. One branch is called as the Arabian branch, obviously the one which is flowing over the Arabian Sea.
and the other branch is called as the Bay of Bengal branch, which is flowing over the Bay of Bengal. So what is the break in the monsoon? The rain in the southwest monsoon begins rather abruptly. One result of the first rain is that it brings down the temperature substantially. Obviously बारिश आते ही temperature आप देखोगे ठंडक हो जाती है. Then the sudden onset of the monsoon laden winds associated with the violent thunder and lightning is often termed as the break. Okay, so this break in monsoon is due to the rain fails to occur for one or more weeks during the southwest monsoon period after having rained for few days. So वो छोटा सा जो ब्रेक आ जाता है मॉनसून पीरियड में, उस ब्रेक को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इन मॉनसून्स कहते हैं. सो दीज ब्रेक्स इन द डिफरेंट रीजन आर ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या रीजंस है इसके? इन नॉर्दर्न इंडिया द रेन्स आर लाइकली टू फेल if the rain-bearing storms are not very frequent along the monsoon through or ITC over the region. Now, over the west coast, the dry spells are associated with the days when the winds blow parallel to the coast. So these are the two reasons. Now I will explain the complete monsoon to you when I will be launching the geography course. वहां पर मैं आपको complete discussion दूंगा कि monsoon बनता कैसे है, कैसे travel करता है, etc. etc. Next. Which of the following evidence supports continental drift theory proposed by Alfred Wegener? Now, this is a very important research, जिसकी वजह से हमें पता चला कि many, mysteries have been, answered due to this theory, continental drift theory. अगर आपने वो पिक्चर देखी हो Ice Age, it is a very cute movie, I would say. Ice Age is a animated movie of that elephant, and they explain this. There is a part dedicated to this continental drift. Okay, so I hope you guys have watched this video, so understand this with the geographical context, that the jigsaw puzzle, the jigsaw fit of the South America and the African coastline, the occurrence of rich placer deposits of gold in Ghana coast despite the absence of source rock, and the distribution of identical fossils across the ocean. So which of the following is correct? Again, pause the video for, I would say, 30 seconds and then answer. Okay, so answer to this question is D. Now let me explain these statements to you individually, step by step. Now guys, if you see the present world map, if I draw a rough world map for you guys, just give me a second, meanwhile you read the other statements. Okay, this is the rough map that which I am drawing right now. Ignore my drawing because it is working on a pen tab. So this is Australia here. Okay, so this is rough map. Now if you see these portions, if I connect this region of North America and this region, आपको लग रहा है कि ये आपस में फिट हो जाएगा? और अगर मैं इस कोने को इधर फिट कर दूं तो आपको लग रहा है ये आपस में फिट हो जाएगा? सिमिलरली अगर मैं इंडिया के कोस्ट को, आप अपना एटलस खोल के बैठिएगा इसको समझने के लिए, अगर आप अपने इंडिया के इस कोस्ट को अफ्रीका के यहाँ जोड़ना चाहो और ऑस्ट्रेलिया के इस कोस्ट को अफ्रीका के यहाँ जोड़ना चाहो, आप देखोगे ये उठा के सीधा, अगर इमेजिनेशन यूज करोगे तो उठा के सीधा ये फिट इन हो जाएगा. सो this jigsaw fit of South America and the African coastline, this is South America and African coastline, it proves that there were one common landmass. ये कभी एक ही लैंडमास था. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है. नाउ हमारे दो बाकी की स्टेटमेंट्स है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई रिसर्च करी है, यानी इस पूरे कोस्ट लाइन की रिसर्च करी गई है बहुत बार. इस पूरे कोस्ट लाइन की रिसर्च करी गई है और यहाँ पर जो गोल्ड मिला है ना, वो बिल्कुल वही गोल्ड है जो इन रीजन्स में मिलता है, या वही डिपॉजिट्स है. इसी तरह फॉसिल्स, यहाँ पर कई ऐसे जानवरों के अवशेष भी मिले हैं. वो ऐसे जानवर थे कि ना तो वो इतना बड़ा अटलांटिक ओशन पार करके जा सकते थे, ना उड़ के जा सकते थे, ना तैर के जा सकते थे. सो किसी भी फॉसिल या किसी भी जानवर के स्केलेटन को देखकर, स्केलेटल रिमेन्स को देखकर आप ये पता लगा सकते हो
कि वो किस तरह का जानवर है, वो चिड़िया है, वो लैंड एनिमल है, वो क्या है। सो हमें ऐसे कई फॉसिल्स मिले हैं जो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम डेट के हैं, लगभग उनकी डेट आसपास की है, एंड वो दोनों जगह मिले हैं। दैट मीन से कभी लैंड मास एक था जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग हो गया है। ठीक है, सो यहाँ से हमारा प्रूव होता है गोंडवाना लैंड, इफ यू हैव हर्ड ऑफ पेंजिया। ठीक है, ये बचपन में हमने कुछ क्लासेस में पढ़ा था, 6 क्लास की एनसीईआरटी में ये सब मेंशन्ड है। ठीक है, सो इन सब चीजों को आप देख सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज डी। आई एम सॉरी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओशन ट्रेंचेस। ठीक है, अगर आपने नाम सुना हो मरियाना ट्रेंच, गाइस ये मेरी जो सीरीज है 10 क्वेश्चन वाली 1000 स्टेप्स टू यूनिफॉर्म, जहां पर मैं 10 क्वेश्चन आपको हर वीडियो में लेके आऊंगा। ये सीरीज आपको हेल्प करती है किस चीज में? ये सीरीज आपको हेल्प करती है अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इस वीडियोस को देख सकते हो, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट को समझने में, चीजों को समझने में मदद मिलती है। अगर आपका भले ही लेवल 0 क्यों ना हो, तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये फ्री इनिशिएटिव मैंने आप सबके लिए लॉन्च करा है, जहां पर आप कुछ ना कुछ सीख सको, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर काम कर सको। ठीक है, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओशन ट्रेंचेस। They are located along the divergent plate boundaries। जहां पर प्लेट्स डाइवर्ज कर रही है, ये उसके along क्या बोलते हैं, ओशन ट्रेंचेस बनते हैं। They are associated with active volcanoes and strong earthquake। Tonga Trench, Mariana Trench are located in Pacific Ocean। So यहाँ पर फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों का यहाँ पर सवाल है ना। कुछ सोच के देखिए गाइस, फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप आपको गलत सी लगेगी, बिकॉज जो ट्रेंचेस है वो आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री पर मिलेंगे। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर मिलेंगे। आई फॉरगॉट टू गिव यू द टाइम पीरियड, मैं आपको पॉज देना भूल गया इस सेक्शन में, बट आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। सो जब भी दो प्लेट्स, अगर ये मान के चलो दो प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, तो होगा क्या, एक प्लेट दूसरी प्लेट को नीचे धकेल देगी। और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पर, इतना आसान नहीं है ये, और ये मत सोचिएगा एक दिन में ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये डीप पोर्शन है, इस डीप शेडेड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओशन ट्रेंच, क्योंकि ये पानी के नीचे हो रहा होता है। ठीक है, पानी के नीचे। So this portion is called as ocean trench. Okay, this is answer to question number 6th in this case will be C. ठीक है, because statement 1 is wrong। अगर स्टेटमेंट 1 आप जैसे ही गलत करते हैं, आप दो ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। और अगर आपको पता है स्टैटिक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको वोल्केनोस और अर्थक्वेक जरूर मिलेंगे, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज सी। ठीक है, थर्ड की आपको पता होना चाहिए, मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दिस रीजन, पैसिफिक ओशन में। गाइस, रिंग ऑफ फायर, इफ यू नोन टू रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, रिंग ऑफ फायर क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। Latitudes is measured as an angular distance of a point on Earth's surface, north and south of the equator. Both latitude and longitude of a place are measured from the center of the Earth. Which of the following statement is correct? You can let me know. I'm giving you a pause. Hit the right answer. Okay. So in this case, guys, if we know that latitude is measured as an angular distance of a point on the Earth's surface, north and south of equator, this statement is absolutely correct, because yes, even equator is an angular distance from the center of the Earth। Now imagine this Earth as a 3D figure। इसको एक 3D figure imagine कीजिए, और उसका जो angular distance होगा from the center of the Earth, center of the Earth से अगर मैं एक एंगल खींचूं और अर्थ पर एक सर्कल बना दूं, तो वो हमारा होगा 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरह 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, और 0 डिग्री पर अगर मैं एक लाइन खींच दूं, तो 0 डिग्री एंगल पर एक लाइन खींच दूं, तो वो होगा हमारा इक्वेटर। सिमिलरली, both latitude and longitude of a place are measured from the center of the earth। This is also absolutely correct statement,
ठीक है, दोनों सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर होता है, इसी तरह प्राइम मेरिडियन भी मेजर होता है. सो यू कैन लर्न ऑल द स्टफ्स फ्रॉम हेयर. ओके, ऑल द स्टफ्स फ्रॉम हेयर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, so you can read the explanation. Also I will be providing the PDF free on this telegram channel को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा. ऑल्सो मुझे कुछ लाइक्स देना ना भूलिएगा गाइस, आप लोग आजकल लाइक्स नहीं देते हो मुझे. आई नो एवरी यूट्यूबर सीक्स फॉर सच लाइक्स. अच्छा लगता है थोड़ा सा. आप भी, बहुत सारे लोग खुद भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं, फिर वो भी डिमांड करते हैं कि सर मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए. अगेन यू शुड नो दैट again reciprocal hota hai guys. If someone supports you, you should also support someone other. Or at times we get irritated as well that why this guy is again seeking for likes and likes. But again, put yourself in other shoes, other one's shoes, other shoes I would say rather. So समझने की कोशिश कीजिए. जब आप ऐसा कुछ करेंगे किसी भी चीज पर, you always get motivated with the support that you get. So do like and share this video. Also get me some subscribers on this channel. Then we will start with some live sessions as well. ये classes बहुत जल्द मैं आपके लिए live भी लेके आऊँगा. So which of the following refers to the playa? What are playas in geography? Geography में playas किसे कहते हैं? Shallow lakes in the depressions found in the deserts, unsorted, coarse and the fine debris dropped by the melting glacier, large size angular blocks plugged from the land by glaciers, small round shallow depressions formed from limestone surfaces. So which of the following is correct guys? ये सारे questions बनते हैं landforms से. Okay, these questions are from landforms and very important. Why? Because directly or indirectly UPSC do ask such questions. Okay, please give me the right answer in the comment box or you can mark it in your notebook. I'm waiting. Okay, so the answer to this question is A guys. Playa are the lakes. ये lakes बनते हैं, कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ. Now plains are far most prominent landforms in the deserts. We all know that deserts are usually plains. In bases with the mountains and the hills around and along the drainage towards the center of the basin, due to the gradual deposition of sediments from the basin margins and nearly level the plain from the center of the basin. Now due to the erosional activity, depositional activity, होता क्या है guys, एक depression सा, एक गड्ढा सा बन जाता है. तो कई बार क्या होता है, इस डिप्रेशंस में डेजर्ट में पानी जम जाता है. जब भी बारिश होगी या छोटी मोटी भी बारिश होगी, यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी जम जाएगा और ये कभी कभार ये पानी डिसअपेयर कर जाएगा जब ज्यादा हीट होगी. तो आपको ऐसा लैंड दिखेगा जो कि क्या होगा, seepage covering the depression or the plain with a shallow water body. Now such type of shallow lakes are called as playa, where the water is retained for a short period of time and due to evaporation the quite often these playa contain heavy deposition of salt. अब evaporation के बाद नमक वहां रह जाएगा. जैसे आप टिपिकल वैसा बैकग्राउंड जैसे कच्छ, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कच्छ आपने देखा, वहां पर ऐसे प्लाया लेक्स बहुत मिलेंगे क्योंकि ड्राई रीजन है वो भी. ठीक है, काफी कुछ इवेपोरेट हो जाता है, बचता क्या है, एक सॉल्टेड पैंस. अब वो सॉल्टेड पैंस का बनने का रीजन बहुत डिफरेंट है, बट ये प्लायास उसके कंपैरिजन में बहुत छोटे रीजन में मिलते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी तीन, आपका होमवर्क है, जो बाकी तीन लैंडफॉर्म्स हैं उनको क्या कहते हैं, आप जरा सर्च कीजिएगा. देखते हैं कि कितने लोग इसके सही आंसर, बाकी तीन लैंडफॉर्म्स को क्या कहते हैं, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. नेक्स्ट, which of the following statements are correct with the reference to the western disturbances? Western disturbance क्या क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? They are shallow cyclonic depressions originating over the eastern Mediterranean. Arrival in India is characterized by sudden drop in the prevailing night temperatures. It is beneficial for the rabi crops in northern India. So which of the following statements are correct here? Now again I'm giving you 30 seconds of time to hit the right answer, but I will pause it for 5 seconds only. Okay, so the correct answer to question number 9 is C. So let me explain. Western disturbances किसे कहते हैं guys?
Especially I'm talking to the North Indians who belong from the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, ठीक है, Delhi, UP, parts of MP, Rajasthan, ठीक है, all these northern states, guys, all these northern states, they witness a few short period of showers in the month of Jan and Feb. यहाँ पर एक छोटी सी बारिश होती है. These rainfalls are called as western disturbances. ये किस वजह से होता है? कुछ ऐसी जेट स्ट्रीम और साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी के पास, और वो मेडिटेरेनियन सी के से ट्रैवल करते हैं ईस्टवर्ड, एशिया के टुवर्ड्स, ठीक है. दे आर स्टीयर्ड इन इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ये डिप्रेशन सी ट्रैवल कर जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो जाती है. तो यहाँ पर एक अच्छी बारिश मिलती है आपको. नाउ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कॉज्ड बाय दिस मिराज इज हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप. नाउ गाइस, इस टाइम पर आपकी गेहूं की फसल ऑलमोस्ट तैयार होती है. अब जब इस गेहूं की फसल पर थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है तो ये सोने पे सुहागा हो जाती है, क्योंकि जैन फेब में ऑलमोस्ट फसल तैयार है, मार्च अप्रैल तक आके वो कट जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा तैयार है और फिर वो उसकी कटाई हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, बट कई बार ये जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग होती है तो वो हैवी शावर्स गिरेंगे और हैवी शावर्स उस फसल को गिरा देंगे, जिसकी वजह से फसल कई बार खराब भी हो जाती है और ओले वगैरह भी गिरते हैं. सो एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो गलत हो गई है, एन इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर्स जनरली इंडिकेट्स द एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ दीज साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. रात में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है rather than getting decreased. Okay, so this is not correct. The last question for today's video, with reference to the Earth's gravity, consider the following statement. It is influenced by the distribution of mass of the material within the Earth. It is greater near the poles and than at the equator. It is greater near the poles and than the equator. ठीक है. Okay, so which of the following is correct? I am giving you 30 seconds of time to mark it, pause the video, and then hit the right answer. Okay, so the correct answer to this question is C. The gravitational force is not same at different latitudes on the surface. The gravity is different at different place. Obviously, it is influenced by what is the mass material inside the earth. जहाँ पर बहुत ज्यादा भारी mass material होगा वहाँ पर value of G may differ according to in context of the places which have less of the mass material. It is greater near the poles and less at the equator. Obviously, ठीक है, value of G is more at the poles than in equator because of the distance from the center and the earth. Now the reading differs from the expected values. Such a difference is called as the gravity anomaly. The gravity anomaly gives us an information about the distribution of mass of material in the crust of the earth. So both the statements are absolutely correct. So time now for the daily motivation, guys. You all know that every video ends with a motivation. So आज का thought आपके लिए क्या है? The distance between your dream and your reality is called action, my friends. ठीक है. अपने सपनों में जो सपने आपने देखे और उसको हकीकत बनाने में जो बीच का डिफरेंस है वो है एक्शन. एक्ट कीजिए, काम कीजिए. ठीक है. सिर्फ बोलिए मत, इधर उधर यूट्यूब पर इधर उधर घूमिए मत. डेडिकेटेड एक जगह रहिए. ऑब्वियसली आप इस एंड तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मीन्स आप बहुत ईगर हो और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हो. ठीक है. कई लोग बस स्टार्टिंग का देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. सो दिस इज व्हाट एक्शंस आर, गाइस. गिव इट अ थम्स अप. इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मोटिवेशन पसंद आई. चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. ठीक है. और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऑल अपडेट्स यू विल बी गेटिंग ऑन टाइम, नोटिफाइड बाय यूट्यूब ओनली. सो दैट्स इट फॉर द डे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. मेहनत करते रहिए, सपने जरूर सच होंगे मेरे दोस्तों. टेक केयर एवरीवन.